Hello, hello everyone. Hello everyone. Good evening. To hmm, let's wait for a minute or so. Yo, good evening, good evening. कल ऑलरेडी लेक्चर 8 हो गया था क्या? Let me just check again. आज का लेक्चर 9 है. Okay, okay. Uh, let me just give a call on the group as a voice chat. हेलो भाई, ज्वाइन कर लो. ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो. Okay. चलो, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. शुरू कर देते हैं. Start today's lecture. Before that, the regular question: Are you practicing? Are you guys practicing? Yes, no. चल रहा है, चल रहा है, ये चल रहा है. Are you guys practicing or not? Yes, yes. Okay. Others, practice, guys. Okay. So, as usual, we will start with a quick, quick recap, and then I will try to cover like string तो खत्म हो जाएगा आज, but I will still try to cover the list part. ठीक है, list आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, so what I will do, I will let me just complete the string part. ठीक है, lecture 9. string function ये part 3 चल रहा है हमारा. part 3. तो कल हमने कुछ इतने फंक्शंस देखे थे. स्वैप केस देखा था. ठीक है, रिप्लेस देखा था. काउंट, इंडेक्स, फाइंड, डिलीट, लेंथ, स्प्लिट, डॉट जॉइन एंड फिर स्टार्ट फिर. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विथ अ न्यू फंक्शन. उसका नाम है इज.
अल नम, ठीक है। इस अल नम पकड़ लो या फिर इसी के सिमिलर से फंक्शन है, सारे ही एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। इज अल नम हो गया, उसके बाद इज अल्फा हो गया, ठीक है। इज अल्फा, अरे यार, इज अल नम हो गया, इज अल्फा हो गया। देन वी हैव दिस इज डेसिमल, decimal, okay, is decimal, and then I think we have is digit, is digit, okay, is digit. So all these are एक is numeric दिया, is numeric, okay, is numeric. So all these are for checking whether the you if you have numbers or alphabets or whatnot, ठीक है। जैसे ये हो गया, सबके एग्जांपल दूंगा, ठीक है। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरीवन एवरीथिंग, तो नो वरीज, ठीक है। सबसे पहले है हमारा इज अलनम, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा, सबसे पहले एवरीथिंग, एवरीथिंग विल गिव यू आंसर, ऑल दीज फंक्शंस विल रिटर्न आंसर, विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सारे के सारे ट्रू और फॉल्स में जवाब देंगे, ठीक है। देन स्पेसिफिकली इज अल नम क्या करेगा, यहाँ पर देखो, इज मीनिंग क्या है, अल मीनिंग अल्फाबेट, नम मीनिंग न्यूमेरिक, ठीक है। नम मीनिंग न्यूमेरिक, जैसे ये हो गया इज अल्फा, ये बस अल्फाबेट चेक करेगा। इज डेसिमल, ये बस चेक करेगा वेदर वी हैव अ डेसिमल और नॉट। इज डिजिट एंड इज न्यूमेरिक ऑलमोस्ट वर्क्स द सेम, ठीक है। तो इज अल नम क्या करेगा, इट विल चेक वेदर अल्फाबेट and numeric numeric should present, or right, and it does not consider what uh, it does not consider special character, special characters, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देता हूँ। नाउ हर एक एक अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, इज अल्लाह, ठीक है, इज अल्लाह। सो लेट्स पिक दिस अप यहाँ पर, let's pick this up here and let me give you one example of this, okay। So let's say you have a string, let's say you have a string, the string is like this, python 3, okay, python 3। तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें एक अल्फाबेट दिख रहा है, राइट, ए बी सी डी। चलो सी को कैपिटल कर दो, कैपिटल क्या क्या दिख रहा है, कैपिटल ए टू जेड दिख रहा है, स्मॉल ए टू जेड दिख रहा है, एंड जीरो टू नाइन दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स भी दिख रहे हैं, स्मॉल लेटर्स भी दिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स भी दिख रहे हैं। इफ आई से स्ट्रिंग डॉट इज, बस इतना डालते ये सारे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सारे देख लेंगे आज, इज अल नम, इज अल्फाबेट, इज ये देख लूंगा, इज अस्की या जो भी बोलते हैं इसको, डेसिमल डिजिट, ये नहीं देखेंगे शायद, लोअर न्यूमेरिक प्रिंटेबल एवरीथिंग। So if I click here, is al-num, meaning क्या है, is al-num, like alphabet है, do we have a alphabet, alphabets है, do we have number, we have number। if I run this I should get true, ठीक है। हमने यहाँ पर देख all these function will return true or false, ठीक है, true or false। one more question, one more example। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। अगर इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये क्या चेक कर रहा है, बस चेक, इट इज जस्ट चेकिंग अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, ओके, इट इज जस्ट चेकिंग अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, ओके। एवरीवन गॉट दिस, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं चेक करेगा, ठीक है।
इसके अलावा ये कुछ भी नहीं चेक करेगा। इवन इफ यू से यहाँ पर अगर आप इवन इफ यू सिंपली इंस्टेड ऑफ दिस अंडरस्कोर इफ यू सिंपली पास स्पेस, ठीक है, स्पेस लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, स्पेस, स्टिल इट विल रिटर्न फॉल्स। सो इस अल नम क्या चेक करेगा, ये दो चीज है बस। देयर हैज टू बी अल्फाबेट, अल मीनिंग अल्फाबेट, नम मीनिंग नंबर्स। ओके, अल मीनिंग अल्फाबेट, नम मीनिंग नंबर। ओके, एक क्विक एग्जांपल देते तो व्हाई वी आर लर्निंग दिस, ठीक है। लेट्स से यू आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, आपके पास एक एप्लीकेशन है वेयर पीपल आर पोस्टिंग देयर पैन कार्ड नंबर, ठीक है, पैन कार्ड नंबर ले लेते हैं। So you need to make sure whether the user is uploading a right PAN card number, ठीक है। Many of the times you may have visited a website, जैसे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, ठीक है, बट वहाँ पर अगर आप आपका पैन कार्ड नंबर डालते हो तो इट सेज लाइक, अगर आप इनवैलिड पैन कार्ड नंबर डालोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली से कि आपका पैन कार्ड नंबर गलत है, ठीक है। तो हाउ विल यू गेट टू नो, लेट्स से यू से पैन कार्ड नंबर इक्वल्स टू एनी पैन कार्ड नंबर, ठीक है। ए बी सी, ये कुछ हो गया, 5 नंबर, ये हो गया आई थिंक 4 नंबर्स एंड ये और ठीक है, ऐसे दिस इज एग्जांपल वाला है, ठीक है, कुछ एग्जांपल है। So I will say if length of your PAN number, ठीक है, length of your PAN number is equals to 10, ठीक है, क्योंकि 10 डिजिट्स चाहिए। अदरवाइज अगर कोई नौ डालता है तो वी शुड से कि अरे दिस इज नॉट राइट, ठीक है। एंड एंड पैन नंबर शुड बी इज अलनम क्यों, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट से न्यूमेरिक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया तो वी शुड से आपका पैन कार्ड नंबर इनवैलिड है, सो नाउ आई एम एडिंग अ स्पेशल कैरेक्टर, so it will say invalid PAN card number. If I remove this, what will happen? It will say valid PAN card number because its length is 10, right? And it is alphabet and numeric, right? It is alphabet and numeric. So this is how in the backend these websites use these kind of functions. Okay. So whatever you are learning here, these things are really important. Okay. These things are really important in order to what, build your own application in the future. Okay, build your own application. So I'm moving to next one. So ये वाला तो उससे भी सिंपल है, ठीक है। इज अल्फाबेट, इज अल्फा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। इज अल्फा क्या रहेगा, ये बोलेगा हम बस देखेंगे क्या ये अल्फाबेट है, ठीक है। लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू अगेन पाइथन, ठीक है, सिंपल पाइथन। एंड इफ यू से string 1 dot is is alpha, okay, like this, meaning you will just check whether this is alphabet or not, okay, it will return true, okay, it will return true। और अगर मैं बोल दूँ python version 3.13, okay, 3.13, so I have added what, numerics, I've added numerics, so it should return false, okay, because it is just checking alphabets, okay, it is just checking alphabets। so where this will be used, let's say कोई उसका नाम डाल रहा है, राइट, तो नाम के अंदर तो नहीं होता है, राइट, कोई नंबर, राइट, लाइक दिस। तो नेक्स्ट इसके बाद का जो है हमारा है इज डेसिमल, ठीक है, इज डेसिमल। तो इज डेसिमल क्या करेगा, मोस्टली इट इज लाइक लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू some numbers, okay, some numbers, then you will say string 1 dot is decimal, ठीक है, is decimal, so it should return true, okay, it should return true। और अगर सिमिलर चीज, सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स से डॉट p2 ऐसा मैंने कुछ ऐड कर दिया तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, ठीक है, इट शुड रिटर्न फॉल्स। so like this it works। one more example let me give you, पैन कार्ड वाला ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से यू विल सिंपली से पैन
कार्ड जो हमने पैन नंबर लिया था, ठीक है। एंड इफ आई से इज डेसिमल, तो इट शुड आल्सो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। पैन कार्ड नंबर कैसे था हमारा, कुछ इस तरीके से था, दिस वन जो हमने ऊपर ऐड किया, लाइक सो इट विल रिटर्न फॉल्स, ओके, इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट हमारा था इज डिजिट, इज डिजिट, डिजिट। तो सिंपल ये भी क्या करेगा, almost it will work similar like the above, ठीक है। So if I just copy this one instead of this, if I say is digit, okay, I run this, it will say what, true, okay, it will say true. But what if I add a special character here, what if I add a special character, so it should say false, okay. And even this will not even entertain what, let's say you have a Aadhaar card number, okay, Aadhaar card number. It will still say false. Why? Because there are spaces in between, okay. And very similar again, और एक है जो है is numeric, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है, न्यूमेरिक मतलब नंबर चेक कर रहा है, डिजिट मतलब नंबर डिजिट चेक कर रहा है, डेसिमल मीनिंग अगेन डिजिट चेक कर रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दिस। सो इफ आई रन दिस विथ लेट्स से स्ट्रिंग 2 इक्वल्स टू, कुछ नंबर मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, इफ आई से स्ट्रिंग 2 डॉट इज numeric and run, it will say true, okay, it will say true. And if I just add a, let's say text, ठीक है, मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स ऐड कर दी क्यू क्यू, so it should say false. And again if I accidentally add any special characters, okay, let's say space ऐड कर दिया मैंने, और ठीक है यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर दिया, it should say false, okay, it should say false. So like this, all these are uh, सबसे पहले all these, what these returns true and false, ठीक है, these returns true and false. Is alnum क्या करेगा, it will look for alphabets and numeric, okay. Even though if you add any underscore, okay, if you add any underscore, it should return false, okay. Any space, any special character, it should return false. This is one example for you to understand whatever you are doing is worth learning, okay. Then is alpha हमने देखा, is alpha क्या करेगा, it will check for alphabets only. If you add any space or add any numerical value, it will return what, false. Then there is this is decimal, it will almost work like is decimal, is digit, and is numeric will almost work the same, ठीक है, work the same, okay. ये क्या करेंगे, जब भी नंबर्स आएंगे ये ट्रू बोलेगा, this will also say true, this is also say true, okay. Other than that, अगर आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट डालते हो या अंडरस्कोर डालते हो या स्पेस डालते हो, both of three of them will say false, okay, three of them will say false, okay. So ये कुछ इस तरीके से हमने सीखा, ठीक है। any confusion here, is this clear, any doubt, any doubt, any slightest of this, explain is decimal again, please, sure, explain is decimal again, clear, someone says clear, okay. Let's try and understand anything, anyone like to, okay, this is clear. All right, so let's understand is digit or is decimal, like all three are same guys, like is decimal क्या है, मैं ना एक एग्जांपल ही देता हूँ, ठीक है। Let me just give you one example. Let's say I have a string 1 is equals to 1 2 3 4, okay, 1 2 3 4. So if I say print string 1
dot is digit is decimal, तो is decimal और इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ। इसके बाद हमारा है print string of is digit, ठीक है, is digit। So all these three तीनों भी क्या करेंगे, if there is a number inside a quotes, if there are number inside a quote, it will return true. All three things will return. Okay. So Ria says what will happen if any string having inside numbers. So for that Ria, I will tell you. Okay. So I think this is clear. Like let's say one more example. Let me give you for the same. Okay. Comparison. Let's say I add here a underscore. Okay. I add here an underscore. So what will happen? To return false. Okay. So these three almost works the same. Okay. These three almost works the same. Okay. So if you know this, you know this also, you know this also. Okay. Coming back to Miss Ria's question, let's say you have a string equals to Python, on की जगह double zero and n, okay, double zero and n. So if you use this, ये सब क्या कर देंगे, false ही दे देंगे, okay. But if you use print string is al num, ठीक है, क्या use करोगे, is alphabet and numeric, use is alphabet and numeric, it should return was true, okay, it will return true because is al num will check for whether we have alphabet or we have a numeric, okay. और इसके पहले अगर मैं फिर से for example if I say string dot is alpha भी कर दो, ठीक है, is alpha भी कर दो, so what will happen is it will also return true false. Why? Because there are numbers. So is alphabet will check, यहाँ पर लिख देता हूँ, this will look for numbers, okay, this will look for numbers, this will also look for number, this will also look for number, okay, this will also look for number, okay, this will look for only alphabets, okay, and this will look for alphabets and numbers, alphabets and numbers, okay, like this. So run this, it will return. So now you have a complete idea what I am learning, okay, what alphabet is doing is like understand this. Is numeric meaning number, is decimal meaning number, is digit meaning number, is alpha and is alpha meaning alphabet check करेगा ये सिर्फ, ठीक है, and is all numbing is क्या ये alphabet है, क्या ये number है, ठीक है, so that's why it will look for alphabet. So I hope this is clear now. This is clear now, even for Ria from YouTube, even for Ria from YouTube. Vivek, yes, Vivek in it. Mm, okay, thanks, Ria. Thanks, Ria. Clear. Thanks, now. Thank you. Cool. Vivek, if you have any question, you can keep your mic on. Otherwise, please turn off the mic. Okay. Then now let's try and understand. Is lower. So is lower. Is is upper. Okay. Is upper. Is lower. Is upper. Okay.
इज लोअर इज अपर। तो हमने लोअर एंड अपर सीखा है ऑलरेडी गाइस, ठीक है, लोअर एंड अपर सीखा है ऑलरेडी। तो लेट मी जस्ट गेट दिस, जो कि थोड़ा सा ठीक लगा, ठीक है, इज लोअर इज अपर देखेंगे। So let's say you have a string and the string is um, let's say the string is uh, generative generative or the string is chatbot, ठीक है, the string is chatbot. So if you say string dot, okay, सिर्फ is टाइप करते हो तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, कहीं पे लोअर आ जाएगा, ठीक है। so if I say is lower, so it will check क्या is meaning क्या रहेगा, always it will say क्या ये lower है, is it lower, it will say true, right? It will say true. And if I simply say mm, string string equals to string equals to gen AI, ठीक है, gen AI. And again, if I say string dot is lower, okay, it will say false, right? Because this is not in a lower case. This is in a lower case. That is why it is saying true. This is in a upper case, so that's why it is saying false. Okay. Now, with the same example, if I say is upper, यहाँ पर भी if I say is upper, if I run this, it will say false. If I run this, it will say true because this is in upper case, this is in a lower case. Okay, simple है, समझने के लिए। So ये कहाँ पर वर्क होगा? Let's say you have a very big data and you want to know, you want to check whether the some chunks from the data has some uh, lowercase characters or uppercase characters. Okay, lowercase characters or uppercase character. Okay, then after this there is a similar thing like is title. Okay, is title. So is title क्या करेगा? It will again check whether if you have a data, whatever the data you have. Let's say you have a string and the string says I love India. Okay, I love India. If you check string dot is title, it will say true because each and every start first letter of the word of the sentence is in the title. So जब हम title में convert कर रहे थे, right? Everyone remember from like, in a yesterday class we learned this title, right? We learned this title. So if the string is title it in title, so it will return true. Otherwise क्या होगा? Otherwise क्या होगा? So let's say I don't have this. Okay, I don't have this like this. बस starting का ही है. So let's check. It will return false. Okay, it will return false. So similarly ऐसे is capital भी रहेगा, शायद रहेगा. String dot is capitalize capital. अच्छा is capital नहीं है, ठीक है. Anyway, अच्छा है. तो नहीं है. String object has no attribute is capital. है नहीं भाई ये function. Anyways. So similarly ऐसे ही कुछ फंक्शन है और फॉर एग्जांपल रहेंगे इज स्पेस, ठीक है, इज स्पेस नामक और एक फंक्शन है। तो ये क्या चेक करेगा? ये क्या चेक करेगा? लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग 2 इक्वल्स टू, बस स्पेस है इसके अंदर, ठीक है, बस स्पेस है। नाउ यू विल चेक इज स्पेस, so what will happen? It will return true because यहाँ पर सिर्फ स्पेस है, राइट, सिर्फ स्पेस है। But what if I add something here like this? So it will return false, right? So ये कब काम आएगा? Let's say you again have a very huge data set and then you want to check whether वो सारा ही data खाली तो नहीं, बस space ही तो नहीं भरा उसके अंदर, ठीक है? So in that case you will check whether we have a space or not. Okay, we have a space or not.
तो क्विकली और दो फंक्शन ले लेंगे एंड देन इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. मेनली आई विल revise you and then we will do some question answer, interestingly question answer session. ठीक है. One more function is there, z fill. Okay, z fill कुछ अलग सही है, right? कुछ अलग सही है, बट ये आपके डेली लाइफ में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 7789. ठीक है, इतना ही है, तो इतना ही आता है. बट मुझे बैंक क्या दिखाती है, मेरा बैंक अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है. जेड फिल 10. माई बैंक अकाउंट लुक्स लाइक दिस. माई बैंक अकाउंट लुक्स लाइक दिस. मीनिंग, if your system wants, so bank account, why they do this? Because their system requires 10 digits. Okay, 10 digits, but you only have these many customers, right? You only have these many customers. So that is why z fill function they use. Okay, whenever you just write your account number, I just only write this account number. This is not actually my account number, by the way. So I just only write these many numbers. It actually consider these, because in the back end in the program they have used what, z fill. So z fill में जितने भी आप numbers डालोगे, let's say if I add 15, it will add 15 zeros. Okay, if I add 15, it will add 15 zeros. Okay, so this one example, this one is one more example. Okay, and it works for anything. बस नंबर के लिए नहीं, अगर आप सिंपली हेलो भी डाल दो ना, तो इसके लिए भी वर्क कर जाएगा ये. ठीक है, हेलो भी डाल दोगे तो वर्क कर जाएगा. ओके, एंड आई थिंक द लास्ट फंक्शन इज सेंटर. द लास्ट फंक्शन इज सेंटर. सेंटर सेंटर क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है. वी आर गेटिंग दिस. लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग इक्वल्स टू something like this. Okay, something like this. So in the मूवी टाइटल पकड़ लो, राइट, या फिर किसी भी चीज को पकड़ लो. फॉर एग्जांपल, सो लेट्स से आपका कोई एग्जांपल, हाँ, ये एग्जांपल लेते हैं. ठीक, ये एकदम ही सेंटर में ही है. ठीक है, ऑलवेज इन अ सेंटर. लेट्स से इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 100 है. ठीक है, 100 है. So it will always be in the center. This will always be in the center, right? So similarly, let's say you have this step. Not really same, बस कोई और लेते हैं. जैसे bat, Batman. Okay, you have Batman as a center, as a text, and if you say string center 10, so if you run this, you'll see इसका एक center आ जाएगा. Okay, it will have a center. If I have a 100 here, so you can see it. तो यहाँ से यहाँ तक की जितना भी है, बैटमैन मेरा सेंटर में आ गया. ओके, इट गॉट जस्ट सेंटर. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग एनीथिंग इन द सेंटर, bring anything in the center, it will just like bring it basically, and nothing more. Okay, bring it. So this is it. Let's quickly have a recap. Okay, is al num क्या करेगा? It will look for alphabet and numeric. Okay, it will look for alphabets and numeric, जैसे capital letters, small letters and numbers. It will not work for special characters. अगर special character भी है जैसे कि underscore है, it will return false. Even if you add a space, it will return false. Okay, this is a valid example. Then is alpha क्या करेगा? It will just look for alphabets. What are alphabets? Capital A to Z, small a to Z. Okay, if you add numbers or any special character, it will return false. Then is digit हो गया, is decimal हो गया, और is numeric हो गया. These both will be working for, अगर numbers है तो it will return for true, true, true. If there is a special character or a space even, it will return false, false, false. Okay, this is one more example जहाँ पर there are alphabets and numbers. Only is all num will return
true, otherwise these will return false. Okay. Later we saw is upper, is lower. Meaning, whenever you have a string in a lower case, is lower will return true, otherwise false. Whenever you have your string in uppercase, is upper return true, otherwise false. Okay. And then we have seen title. Title क्या करेगा? Your string needs to be in a title. Okay, title क्या होता है? Every word is in a capital. Then only it will return true, otherwise false. E space क्या करेगा? There has to be space, only space in the string. If there are numbers or anything, it will return false. If you have only space, then it will return true. Then we have seen Z-fill. Z-fill, always remember your bank account number. Okay? It looks like this. Everyone's bank account looks like this on their passbook actually. Okay? Like this. But you know my account number is only like this. But you don't really have to remember this. If you just simply say this, bank softwares understand because they use Z-fill. Okay. Then we just got to know what is center. Center क्या करेगा? Your text, be it your text or any number, will just bring that text into center. Okay, into center. Okay, cool. So we have kind of finished string function. Okay, we have finished. अरे type क्यों नहीं हो रहा? Anyways, is it clear, guys? Is it clear? Is it clear? Something is issue. कुछ तो issue चल रहा है. Is it clear, guys? Okay, clear. Clear, clear. Anyone else? Any doubt? Any smallest of the smallest doubt? Anyone from YouTube? Any doubt, guys? Any doubt? Smallest of the smallest doubt. Okay. If there are no doubts, then we start question and answer Q&A. Okay, Q&A. So the very first question is if my string is mm, my Aadhaar card number. If my string is my Aadhaar card number. Okay, if my string is my Aadhaar card number, what will happen to is alpha? Okay, if I use is alpha, what will be the answer? True or false? False, 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 false. Cool. Okay, thanks, Riya. Okay, what will happen to digit? Is a digit. True, 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 true. So anyone says true, but let's check whether it will return true or not. ठीक है. तो हमने देखा इज डिजिट बोला ना, क्या बोला? इज डिजिट राइट. इज डिजिट. So my Aadhaar number looks like this: 111 222 333. So if I say s dot is digit, it will return false, guys. Why? Why? Can anyone tell me why? Yes, space. Right? Space is the issue, guys. Space is the issue. So how can we do this? How can we get rid of this? You can use yes dot split, right? You can use s dot split. It will split down into the numbers, right? It will split down into the three different numbers. Then we can dot join. डॉट ज्वाइन के लिए मुझे चलो इतना इतना ठीक है. ठीक है, you can dot join and then
probably remove the space using RE regular expression जो आप आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए अब अगर आपको स्पेस समझना है तो मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। अगेन नाउ माई स्ट्रिंग, मेरा स्ट्रिंग चेंज हो गया, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग चेंज हो गया। इस डिजिट इज न्यूमेरिक एंड इज डेसिमल के लिए सबके लिए फॉल्स आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, ओके, कूल। So now my string has been changed. Okay, now my string has been changed. So my string is AK47. Okay, my string is AK47. Okay, तो सबसे पहले मुझे बताओ is अल्फा क्या करेगा, अल्फा क्या करेगा? What will happen to is alpha? What will happen to is alpha? False. True is wrong. False. Because is alpha will look for alphabets only. Okay, it will look for alphabets only. But we still have numbers. Okay, we still have numbers. So false is the right answer, guys. Okay. Now is al. Now is al num क्या करेगा? ठीक है, is al num. ये ऐसे लिखते नहीं है. It looks it written like this, but मैंने बस आपको समझ दिया. Okay, true, 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 true. People from YouTube, true. Okay, cool. All right. So that is right. Okay, that is right. Now, interestingly, interestingly, I want is alpha in sorry AK47 AK47 in this format, four zeros and four letters. So what should be the code, guys? 0000 AK47. मैंने AK47 तो ऑर्डर कर दी. Right, give me is al number, guys. Z fill 9. Z fill 8. Z fill 8. Anuja. Z fill 8. ठीक है. Z fill is the right answer, but Z fill 8 will be most appropriate. Because why? Because there are 8 digits. ठीक है. Total are 8 elements. Yeah, whatever. Okay. Cool. बाकी इस टाइटल या ई स्पेस है ना, मतलब वो तो मतलब ठीक है, समझ में आ जाएगा. नो वन विल आस्क, ठीक है, नो वन विल आस्क. इतने सिंपल आते नहीं है, बट ये सारे बाद में काम आएंगे जब हम एक्चुअल डेटा पे काम करेंगे. ओके, सो नाउ स्ट्रिंग इज ओवर गाइस. ठीक है, स्ट्रिंग हमने खत्म कर लिया. कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिस्ट. ठीक है, एक तो मुझे ये बिल्कुल ही फ्रेश शुरू करना था, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, लेक्चर लेक्चर 8.8 नहीं है, जस्ट 9.1. ठीक है, 9.1. और उसमें हम देख रहे हैं लिस्ट इन पाइथन. ठीक है, 9.1 9 ही है ना, बस 9 है. इसको 9.1 कर देते हैं और उसको 9.2 कर देते हैं. ठीक है, इसको 9.2 कर देते हैं. ओके, सो one of the most popular one of the most popular topic list. ऐसा कभी नहीं होगा if you are writing Python and you are not using list. ठीक है, it is very much popular, it is very much robust. Okay guys, it is very much popular, it is very much robust. Ria says repeat question. I'm not sure which question. Let me just help you post this uh, lecture. ठीक है, लास्ट में अपन बात करते हैं इसके. ओके, सो कमिंग टू द लेक्चर. सो वन ऑफ द मोस्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, सो एवरीवन नीड्स टू फोकस. ओके, मैं एक लिस्ट का एग्जांपल दे देता हूँ आपको. तो इफ आई से लिस्ट वन, तो सबसे पहले मैं लिस्ट इक्वल्स टू ऐसे यूज नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर एंड दिस इज रिजर्व. ठीक है, so either I have to use list one or my list. Okay, my list, something like it. ठीक है, so if I say list, you need to open this
स्क्वायर ब्रेसेस, ओके, यू नीड टू ओपन द स्क्वायर ब्रेसेस, उसके अंदर यू नीड टू ऐड वैल्यूज यूजिंग कॉमा, कॉमा सेपरेट, कॉमा से सेपरेट कर दो, ओके, कॉमा से सेपरेट कर दो, and if you return my list, it will look like this, yeah, it will look like this, okay, cool. So if I check the type of my list, it will return list, okay, it will return. इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ओके ऐसा कुछ जगह अगर इज देयर एनीथिंग विच इज इन अ स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू टाइप ऑफ ब्रेसेस a little really quickly, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रेसेस, टाइप ऑफ ब्रेसेस में क्या देखेंगे, सबसे पहले अब तक तो हम बस ये वाले ब्रेसेस, अरे सबसे पहले तो हम बस ये वाले ब्रेसेस देख रहे थे, दीज आर कॉल्ड एज पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस बस ये लिख रहा हुआ अभी के लिए। फिर जो कुछ ऐसे ब्रेसेस रहेंगे उनको क्या कहेंगे हम, स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस, ओके, देन देयर इज दिस, अच्छा इसी को है ना, इसी को टप्पल भी बोला जाता है, इसी को सेट भी बोला जाता है, बट उसके अंदर की वैल्यूज डिफाइन करेंगे, अगर इसको पैरेंथेसिस बोलना है, टप्पल बोलना है, सेट बोलना है, अभी के लिए बस हमने ये देखा इसलिए पैरेंथेसिस बोलना, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इसको पैरेंथेसिस बोलेंगे, जब भी हम कोई भी वैल्यू पकड़ लो, ठीक है, आई एडेड दिस 100 इन दी राउंड पैरेंथेसिस, राउंड ब्रेसेस भी बोल सकते हो, ठीक है, राउंड ब्रेसेस भी बोल सकते हो, देन देयर इज दिस, ऐसा कुछ कर ली, अरे यार कितना घटिया निकाला गई, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ राउंड इसको कहते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है, अरे इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड डन दिस गारंटी, तो इनको कहेंगे हम, इनको कहेंगे हम पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, इनको कहेंगे हम स्क्वायर ब्रेसेस, इनको कहेंगे हम करली ब्रेसेस, ओके, बस इतना ही है, इतने ही तीन टाइप के ब्रेसेस है, तो विच एवर, अब तक हमने बस यही देखा था, पैरेंथेसिस ही देखे थे, नाउ स्क्वायर ब्रेसेस, so anything in which is inside square braces and separated by comma is called as list, तो हमें एक definition भी मिल गई, anything, anything which is inside square braces and comma separated are called, or is called a list, okay, स्क्वायर ब्रेसेस कैसी रहती है, इस कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से, तो आई होप ये इतना तो समझ में आएगा, ठीक है, नाउ दिस इज अ ट्रांजिशन टू सम लाइक, अब तक हम लिस्ट डेटा टाइप पढ़ रहे थे, नाउ वी आर लर्निंग, चल अब तक हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ रहे थे, माय मिस्टेक, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, पिछले लेक्चर में चले जाओ स्ट्रिंग डेटा टाइप, नाउ वी आर लर्निंग लिस्ट डेटा टाइप, ओके, लिस्ट डेटा टाइप, हमने स्ट्रिंग देखा, न्यूमेरिक देखा, अब हम लिस्ट डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, remember first lecture, so where we talked about this list, so लिस्ट के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, ओके, और जानने की कोशिश करते हैं, so we can also say, यही पे जानते हैं, ऊपर ही जानते हैं, it is a collection of items, आइटम्स, ठीक है, आइटम्स में क्या क्या आएगा, आएगा स्ट्रिंग आएगा, नंबर्स आएगा, आएंगे, और लिस्ट इटसेल्फ आएगी, टपल्स आएंगे, मैं ये सब बताऊंगा, लिस्ट टपल सेट क्या है, सेट आएगा, डिक्शनरी आएगी, एंड बुलियन भी आएगा, ठीक है, बुलियन भी आएगी, एक्सेट्रा, ठीक है, इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, हाँ यू कैन लाइक आपको पता चल जाएगा, so why it is a collection of these many things, so if you say list one for example, ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि वी कैन ऐड नंबर्स, वी कैन ऐड नंबर्स which is fine, but you can also add string, किसी का नाम, ठीक है, you can also add राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस के अंदर अगर आप कुछ पास करते हो तो इसको हम कहेंगे टपल, ठीक है,
अगर अभी नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं. But inside a list, you can also pass another list, guys. Inside a list, you can also pass another list. So this is a bigger list, and this is a smaller list. Okay, this is a bigger list. This is a smaller list. You can also pass true or false values. ठीक है, इनको कहेंगे boolean values. Okay, boolean values. Right? तो हमने boolean देखा, tuple देखा, list देखा, numbers देखा, string देखी. Now dictionary and set. So set, this can also be a set, but let's understand like this. So next, this can be a set. Let's say 1, comma 2, comma 3. Okay, this can also exist and this can also exist. ठीक है, इसको डिक्शनरी कहते हैं. अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, देयर इज नो वरीज. ठीक है, देयर इज नो वरीज, क्योंकि इवेंचुअली हम जितना स्ट्रिंग को टाइम दिया है उतना ही लिस्ट को देंगे और उतना ही डिक्शनरी सेट टपल्स एंड एवरीथिंग को देंगे, तो आपको समझ में ही आ जाएगा. ठीक है. But why list is very popular? Again, I'm coming there. Why list is very popular? Because it can contain all these data types. Okay. So एक example देता हूँ आपको. So if I go to any कहाँ पर चले जाऊँ, any website, right, जहाँ पर मुझे मुझे अपना नाम देना होता है. ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट बता दो, IRCTC. ठीक है, I don't know, IRCTC. So if you open this website and if you go here, if you go, so here you need to type in the location, right? Location का किस में रहेगी guys? Textual format में. Okay, textual format. You need to write, you need to add the numeric. Okay, you need to add numeric values. You need to add again textual. You need to add some textual plus comma special values, tuples and so on. Okay, tuples and so on. So यहाँ पर कुछ check boxes दिए हैं. Anyway, but now you can see कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पर different type of data types are there. ठीक है, different types of data types. मीनिंग टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, टपल भी है. टपल भी देख लो यहाँ पर, क्या इसको टपल बोल सकते हो, 1 ठीक है. और ट्रू फॉल्स भी आता है बहुत बार. ठीक है. सो टू मेक योर एप्लीकेशन वेरी responsive to or adaptive to different data types, list is very useful. Okay, list is very useful. List is fast also. Okay, list is fast also compared to other data types. So that is why list is very much popular in among the data scientists or developers. Okay, list is very popular. Okay, it can also have the duplicate values. ठीक है, अगर मैं इसके अंदर और एक 3 डाल दूँ, ठीक है, और एक 3 डाल दूँ, if I run this, it will hold that duplicate value. But अगर मैं set के अंदर डाल दूँ, ठीक है, so it will not hold that duplicate value either. ठीक है. So अभी के लिए समझ लो, it can hold duplicate values also. ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, it can contain duplicate values. Okay, it can contain duplicate values. One more thing. Okay, it can return the ordered data. Okay, इसका मतलब क्या है ordered data? जैसे जिस तरीके से आपने डेटा डाला है उसी फॉर्मेट में, in the same order you are getting the data. Okay, in the same order you are getting the data. So why I'm saying this, because in other data types, let's say set or I think set में, ठीक है, it will not return in the same order. Okay, it will not return in the same order. आगे पीछे हो जाएगा. ठीक है, ये चीजें आगे पीछे हो जाएगी. But again, let's not worry about that. List will return data in the ordered form. जैसे अगर आप टाइप करोगे उसी फॉर्मेट में रिटर्न देगा. ठीक है, ट्रू यहाँ पर है, फॉल्स यहाँ पर है, तो इट विल रिटर्न ट्रू फर्स्ट देन फॉल्स. Okay, that is why it is called as ordered data. And last most important, list is mutable. Okay, mutable का meaning editable.
एडिटेबल मतलब मीनिंग है यू कैन चेंज 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 क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ओके, लाइक दिस, like this. So list is mutable. Okay, list is mutable. कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं. Okay, mutable क्या होता है? Let me give you example. Okay, mutable क्या होता है? Let me give you one example. So let's take one list, list one. Okay, list one. इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कॉमेडियंस के नाम. ठीक है. तो फर्स्ट कॉमेडियन है समय. ओके, समय. हु इज अनदर कॉमेडियन? जाकिर. ओके. anyone else? कमेंट में बताओ. anyone else? any और कॉमेडियन? मुझे पता नहीं है ज्यादा. और कौन है भाई? तन्मय ला देता हूँ. ठीक है, तन्मय. और एक ले लेते हैं जैसे कैरी मिनट. कैरी मिनट इज नॉट a comedian, but for example अभी के लिए लेते हैं. ठीक है. So now this is how your list one looks like. Okay? This is how your list one looks like, guys. So जो हमारा इंडेक्सिंग वाला फंडा था, ठीक है, एवरीवन रिमेंबर, हमारा इंडेक्सिंग वाला फंडा था. इट सिमिलरली वर्क्स हियर. समय इज, ये एक लेटर है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है. सो नाउ पॉजिटिव इंडेक्सिंग में दिस इज जीरोथ एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट. नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी -1, -2, -3 and -4. Okay, so if I say list 1 0, 0 क्या देगा मुझे? समय देना चाहिए, राइट? समय देना चाहिए. अच्छा भाई. ओके, लिस्ट 1 इज अ समय. ओके, लिस्ट 1 इज अ समय. बट व्हाट इफ मतलब इंडेक्सिंग फिर से अच्छे से समझो. I just want to explain this mutable. ठीक है. What if someone wants to remove samay from the list? ठीक है. What I am saying, list 0 is equals to empty space. Okay, list 0 equals to empty space. If I run this and if I run list 1, now you can see किसी ने समय को हटा दिया. ठीक है. Just because of some reason. ठीक है. So like this, you can remove this item. Okay, you can edit this item instead of समय. You want someone, Rahul. He wants Rahul here. Okay, he wants Rahul here. So you can see Rahul will be here. Okay, okay, Rahul will be here. So like this, you can edit. You can edit your list. So this is why list is called as mutable. Okay, list is called as mutable. Okay, list is called as mutable. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड वो जो हम देख रहे थे ना, इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग मैंने कहा लाइक लिस्ट, लिस्ट इज वन ऑफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 बोल दूंगा क्या क्या आ जाएगा इस बार? राहुल आ जाएगा, राइट? राहुल आ जाएगा. अगर मैं लिस्ट 1 1 कर देता हूँ तो जाकिर भी आ जाएगा, बिकॉज दिस इज जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड एंड थर्ड. क्या अगर मैं इसी के अंदर -1 डाल दूँ तो क्या आना चाहिए? कैरी मिनट आनी चाहिए. ठीक है, कैरी मिनट आ जाए. ठीक है. एंड अगर मैं कह दूँ -2 तो आ जाना चाहिए तन्मय, बिकॉज दिस इज -1, -2, -3, -4. ओके. सो इट ऑलमोस्ट व्हाई आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, बिकॉज हम स्ट्रिंग में इनको 0, फर्स्ट, सेकेंड बोलते थे, बट इन द लिस्ट values are separated by comma. ठीक है, values are separated by comma. So that is why ये आपका जीरोथ एलिमेंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट. ओके, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एंड फोर्थ. So now let me know if you have
any since like we are almost about time. अच्छा बहुत सारे थे यार, कपिल था, आशीष आशीष चंचलन, सुनील सुनील ग्रोवर, ओके यस, comedian, yes, cool. So any doubts, any doubts guys, any doubts? Yes, no, अगर डाउट है तो let's talk about this. I'm giving you 1 minute to let me know if you have any doubts. तब तक थोड़ा सा पानी. Okay, no, any doubt people on the YouTube? No. अगर नो है तो आई विल आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है. तो ये आपका लिस्ट है, ठीक है. दिस इज योर लिस्ट, लिस्ट वन. इसको रन कर दिया. नाउ आई वांट टू नो, आई वांट टू गेट दिस टू गाइस, एवरीवन. आई वांट टू गेट दिस टू, ओनली टू. आई वांट टू गेट दिस टू. मुझे क्या रन करना होगा? व्हाट आई हैव टू रन? आई वांट आंसर एज, आंसर मुझे टू चाहिए, दिस वन, ये वाला. तो विथ स्लाइसिंग, या स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग प्रिंसिपल जो है हमारा, व्हाट शुड आई राइट? लिस्ट वन, ओके, लिस्ट वन, लिस्ट वन, लिस्ट वन ऑफ वन, ओके. Anyone from YouTube, any doubt? Okay, anything more? So if I run this, I should get this too. Okay, I should get this. One more. अगर मुझे नेम चाहिए तो क्या होगा? नेम चाहिए मुझे guys. नेम, नेम चाहिए, नेम और फेम. क्विकली एनीवन, नेम चाहिए मुझे. ये दे दो यहाँ पर तो काम में. लिस्ट फोर, अरे लिस्ट फोर ये मैंने डाला है, वन गलत है. ओके, लिस्ट फोर, ऑलराइट. लेट्स ट्राई एंड सी अगर नेम मिलता है क्या हमें. ओके, नेम मिल गया, बढ़िया. गुड. नाउ आई वांट दिस टू, या नहीं, दिस टू गाइस, आई वांट दिस टू. ये टू चाहिए मुझे ना, दिस टू. क्या लगता है, हाउ वुड आई गेट इट? मुझे ये टू चाहिए. ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. ये टू चाहिए मुझे. लिस्ट सेट, सेट टू. ओके, दिस इज रॉन्ग. This is wrong. Okay, this is wrong. Okay, try to run your thoughts. Like ये अच्छे guess है, by the way. These are good guesses. This is more good guess. ये थोड़ा और good है. ये guess थोड़ा और ज़्यादा है. अच्छा, ठीक है. So now, first, think in the pieces. Think step by step. Okay. Think in the steps. Think in a steps. So how would I how would I do it? I think the time is up. List one six. This one looks good. Anuja kind of went really good. ठीक है. तो मैं इसको यहाँ पर ही रखता हूँ. अभी ये समझते हैं कैसे जाना है स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले वी गॉट टू नो कि जो भी वैल्यूज है विच आर कॉमा सेपरेटेड, राइट, कॉमा सेपरेटेड. नाउ दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, this is my second element, like basically this is my zeroth element, first element, second element, third element, fourth element, fifth element guys.
ओके, नॉट लाइक दिस इज फिफ्थ सिक्स, ऐसे नहीं, ये मेरा फिफ्थ एलिमेंट, दिस इज माई सिक्स्थ एलिमेंट। ओके, अगर मैं ऐसे कर दूँ सिक्स्थ एलिमेंट को, तो मुझे ये एंटायर एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, एंड नाउ व्हाट हैपेंड, ये इटसेल्फ दिस इटसेल्फ इज अ लिस्ट, दिस इटसेल्फ इज अ लिस्ट। अगर इसके अंदर ये जीरोथ एलिमेंट है तो ये फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, राइट? जीरोथ एलिमेंट है तो ये फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। क्या करूंगा मैं, लिस्ट वन सिक्स के आगे आई विल ऐड first element, and what I will get? I will get this two. Okay, I will get this two. So good going here. ये भी अच्छा गेस था, ये भी अच्छा गेस था, ये भी अच्छा गेस था। Someone सेट ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सेट में इंडेक्सिंग होता ही नहीं है, बट anyways, that's a good guess, कुछ उस डायरेक्शन में। This one also good guess. Okay, so this is what it is now. Okay. इसको और अच्छे से सीखेंगे व्हेन वी विल लर्न एरेज एंड ऑल, तो ये और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, मतलब आपको माइंड में ये जाएगा, ठीक है। बट यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गाइस एवरी डे, जितना भी हम पढ़ रहे हैं। तो सिंस हमारा स्ट्रिंग वाला पूरा लाइक स्ट्रिंग का सारा ही खत्म हो गया है, राइट? स्ट्रिंग अगर हमारा सारा ही खत्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, ठप पर जाएंगे, ये लिंक ओपन करेंगे, ठीक है, दिस लिंक, एंड आई विल ओपन दिस असाइनमेंट, एंड आई विल ओपन दिस फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। सिंस हमारा क्या हो गया कंप्लीट, स्ट्रिंग हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये असाइनमेंट सबको कंप्लीट करना है, ठीक है, सबको कंप्लीट करना है। इसमें बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप केसेस इन अ गिवन स्ट्रिंग, ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो, कुछ इस तरीके से न्यू नोटबुक ओपन कर देना, ठीक है, न्यू नोटबुक। और अगर आप यूएस कोड में कर रहे हो तो दैट इज अगेन मच बेटर। ये ओपन होने में टाइम ले रहा है शायद, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे कहीं पे वो क्वेश्चन लिख दूंगा। जस्ट ओपन अ नोटबुक, राइट दिस क्वेश्चन, पेस्ट दिस क्वेश्चन। तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप केसेस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग क्या है, आपको खुद को ही एक स्ट्रिंग ले लेनी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका खुद का ही नाम ले लो, ठीक है, नाम ले लो सुमेध, ठीक है, नाम ले लो सुमेध, और आपको कहना है स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस, राइट? स्वैप केसेस हमने पढ़ा है, और इफ आई रन दिस इज माई आंसर, बस ये हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट सेल के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एंड दिस, एंड यू सॉल्व दिस असाइनमेंट। कहाँ पर गई असाइनमेंट, यहाँ पर है। ओके, सो मेक श्योर एवरीवन सॉल्व दिस असाइनमेंट। So I am just adding this assignment का link here in the group. Assignment one, assignment one, okay. Must solve, must solve ये link, ठीक है, must solve by date, must solve by date। तो अभी क्या होगा, अभी मुझे बताओ कि कौन से डेट तक आप ये कंप्लीट करोगे। टुडे इज फ्राइडे 6, कल है सैटरडे, परसों है संडे, तो समवन सेज मंडे। वाह, क्या भाई, बढ़िया यूनिट भी है। एनीवन सम मोर वोट्स भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, कूल, मंडे को डिसाइड करते हैं, ठीक है, बाय डेट मंडे। मंडे को क्या डेट आ रहा है कि कोई कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक 8 9 होगा, ठीक है, 9 जून 2025, ओके, मस्ट सॉल्व बाय 9 जून 2025, ओके, तो सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो। तो दिस इज द लिंक, आई होप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आई थिंक यस, दिस लिंक नीड्स टू गेट ओपन, ओके। क्वेश्चन कॉपी करो, पेस्ट करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द ग्रुप, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है, थैंक यू चैतन्य, आई विल रिप्लाई, ठीक है। और अगर इफ आई समहाउ मेरे से लेट हो जाता है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। थियोरेटिकल क्वेश्चन आप ये भाई से पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है, बस
चैट जीपीटी पे जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दो, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन मैंने बस डाल दिया, शायद मैंने भी ऐसी कुछ चीजें नहीं बताई, ये बता देगा, ठीक है। इजी टू लर्न है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, पोर्टेबल है, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, छोड़ दो, ठीक है, राइट, नो इशू। बट जितनी चीजें समझ में आ रही है, जैसे ये चीजें समझ में आ रही है, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, या पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लो। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, आपका जो भी असाइनमेंट रहेगा वहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे आंसर रहेगा, okay, like this. So if somehow I don't reply in a time, so ChatGPT is your friend now, ठीक है। हमारे टाइम में नहीं था गाइस, अब क्या बताएं आपको, बट आपके टाइम में बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स ट्राई टू मेक अ यूज ऑफ दैट, ठीक है। जब हम एआई सीखेंगे तब बहुत सारे एआईज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं खुद कौन से एआई पढ़ रहा हूँ, ये मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, मैं जेमिनाई यूज करता हूँ, मैं मिस्ट्रल यूज करता हूँ, मैं क्यूएन यूज करता हूँ, और यहाँ पर भी कुछ और एआई है, और काफी एआई है, ठीक है। ये एआई काफी एआई मैं खुद यूज कर रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस एआई जो मैं खुद यूज करता हूँ डेली लाइफ में, और आपको भी, आपकी भी लाइफ फास्ट करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी चेक एनीवन फ्रॉम यूट्यूब, नहीं है, ठीक है, नो क्वेश्चन। If you have any, if you don't have any question, if you have any question, let me know. Otherwise, type win in the comments. Otherwise, type win in the comments so that we can close today's lecture. Okay. Win, बतिया, win, बहुत सही। Alright, guys.